The same age child may be having a difference in the weight. So it is very important. So thank you. These are the few points which will be came in my mind, and then I will take it the whole topics answered by our great distinguished speakers at the end of the group discussion. Thank you so much. Over to Pawan Sharma ji. Namaskar. Thank you very much, sir. Thank you very much. We have completed one session. Thank you all for patiently listening. Excellent session. We will take question answer after one lecture of Dr. Kendre. Thank you, Dr. Sarang. Thank you very much. Dr. Sarang is head of the department Rasastra and Bhasaja Kalpana in CRM. So thank you very much, Dr. Sarang, for introducing Dr. Kendre. Welcome, Dr. Kendre. Now stage is yours, and we would like to listen. We are eager to listen really regarding modern aspect of vaccination. Thank you very much, Dr. Kendre. You are joining first time, but we are requesting, please do join every day. Welcome. Thank you so much, Dr. Pawan sir, and Hari Om. And definitely, I enjoyed the total session of this Swarna Prashan. And this is a coincidence that although I am working in allopathic area as a pharmacy in the pharmacy college, but many of the projects that we handle are on the Ayurvedic preparations and herbal preparations. So this is a big coincidence that I am here with on this platform. And I just congratulate Dr. Pawan sir that you are doing very noble job, and this is your, I think, passion that Dr. Sarang sir has told me that. So you want to complete the target of more than 1,000 these webinars. And I think this is very... No, 1,000, sir. Hello, Kendre ji. 1,000 yes, this year. 1,000 this year, 31 March tak. Yes, I just... And many thousands in the coming time. Many thousands in the coming years. Definitely, sir. Definitely. I appreciate that your passion and efforts, and your teamwork is also very good. So thank you so much. Now the topic of today's discussion is vaccination. I just want to share this slide that is only for the purpose here to show that I am not prepared any presentation, because the topic is like this. It is just like a debate, not a session, I think so, because the vaccination boon or curse. Now it is totally depend on the whether the perception of that person based on his experience. As you know, we have gone through the very worst situation of COVID-19 pandemic, and everyone is also witness for this. And thereafter, the role of vaccine was highlighted everywhere globally. And there are many things, many misinformation and myths regarding this vaccination, whether to take these vaccines or not. But if you are looking in the history, and even though many of the participants join here, they have more than 50 years or 30 or 40 years, they may have taken many vaccines, just like smallpox vaccine and then polio vaccine. And even though you can see the smallpox vaccine, which was in 1980, it was completely eradicated from the India. And the polio vaccine also, almost it is eradicated from the all over the world, but still in some part it is existing. But WHO is playing a very important role by just having the various programs. And this program is immunization program. And I think this immunity and immunization, we just came to know from various discussion from this previous session, the role of Swarna Prashan. We are doing some scientific study, and we also studied this Swarna Bhasma, and definitely some of the speaker has mentioned that scientifically these are the nanoparticles, and it is true. And as per our experience and as per the various scientific studies from the nanoparticles, we can say that these nanoparticles are well absorbed. And another thing that honey and cow ghee, which is added along with these nanoparticles, so they are playing important role because they are just covering with the surface of these nanoparticles. And I think that is a crucial role of this honey, as well as this another component that is cow ghee. And scientifically, it is also said that it is get absorbed, but some non-absorbed nanoparticles of gold are playing the role of immunostimulant.
And this is because it is all time it is present, which is not absorbed, but it is playing the role of immunostimulant. And because of that, the immunity and their against that particular, which is acting as an antigen actually, if it is not absorbed. And thereby the antibodies are produced against that. And I think this is also important thing, that it is producing the antibodies which will be playing a role in the defense mechanism. Anyways, this is just, I want to just connect with that, the role of the Swarna Bhashna, and Swarna Prasham, which is acting as a just vaccine, because it is having the very important role in the immunity management. So as far as these vaccines are concerned, these vaccines play an important role, and it has proven that it has saved millions of lives every year. And this immunization currently prevents 3.5 to 5 million deaths every year. So it is very huge. So by just considering this figure of 3.5 to 5 million deaths, it is preventing. So it itself says that the vaccination is very important. And that is the reason why worldwide many of the vaccination programs are arranged. And the government also has many initiatives in the healthcare system of India. And they are making the people aware about the importance of the vaccine. And even starting from the childbirth, this vaccination program is also presented by the physician, and everyone is following that. This immunization can be done by the vaccines, but these vaccines, on another side, have the side effects, but these side effects are very less side effects. And it is mostly observed in case of some of the persons which are who are allergic to these vaccines. Otherwise, very few cases were reported for this vaccine. They have shown the life-threatening effects. And that's why we can say these vaccines are, again, very important as far as our immunization is concerned. And immunity is nothing but, it is a primary component of the healthcare system. And that's why another way to boost up the immunity, we are taking a lot more medication and other form of medication to boost up the immunity. But these vaccines also play the important role in the management of the immunity, because this defense mechanism is only because that when the vaccines, which is made up of some of the dead microorganisms, attenuated microorganisms, so like bacteria and viruses, so it is just creating the antibodies against these vaccines in the body, and these antibodies will play the role of the defense mechanism in the body. So today we have the many examples that vaccines for the purpose of management at polio, then malaria, measles, then yellow fever, then rubella, and so many things, and so many kind of life-threatening diseases. It has mentioned that more than 20 life-threatening diseases are overcome by this vaccination and vaccine programs. But see, another part of this vaccine, as far as its benefit is concerned, so it has reduced the healthcare cost of the patients. If you at the beginning only, if you are taking these vaccines, it is helping us to overcome with the cause of the diseases. So definitely it is also reducing the cost of the healthcare and further consequences which are happening due to the various diseases. Then apart from this, there should be a provision by the healthcare system for the you can say awareness, because even during this COVID-19 situation, for the vaccination, many of the people have shown their less interest for vaccination, and this hesitancy towards these vaccines may be due to some of the misinformation and myths which are, and that we cannot say that they are just believing that vaccines will have the many side effects, but many of the scientific studies has proven that there are not such kind of side effects. And even though this lifestyle, today's lifestyle, if you're seeing, so it suggests that we are just inviting many of the diseases because of the lifestyle. And as it is mentioned in the Ayurveda, to keep your health as such, because Ayurveda itself says, Ayurveda में बोला है कि अपना health अगर वैसे normal रखना है तो वहाँ पे Ayurveda आता है. So there should not be any kind of disease condition. But today's lifestyle is like that. We are inviting a lot of conditions of diseases. So definitely the role of vaccines will be important. And by considering this only, we can have the both sides, because it is again topic of debate. And that's why we will not talk more about this, but we have to balance balance these vaccines for both sides. It is beneficial as well as it is having some sort of
side effects, but the side effects are very less, as I mentioned. And another side effect may be there, because just like antibiotic, which is providing the resistance, so maybe these vaccines are also providing the resistance. The resistance in the sense what? Because when you are taking vaccines, but because of the changing the form of the viruses and changing the mutation form of the bacteria, it is creating the new environment in the body, and that's why the new vaccines, when you are taking it, so it is showing the less effect. So that is the only thing. But then today's date, we know the technology and many of the scientific studies are coming up with the new findings and observations, and that definitely it will help us that to overcome with these problems even in future. And then definitely the vaccines will play an important role in the life of the everyone. So I will not talk much about, because here the vaccines, somewhere it is showing side effects, somewhere it is showing a lot of benefits to the patients. But then still, everyone should know the importance of vaccine, and this importance is only because of its history, where we are find its. Your slides are not moving, doctor. Yes, sir. Your slides are not moving. So, sir, there is no slide. I have not prepared any slide. This is only one slide. I have just open platform and Great, discussion. great, excellent. Salute, Yes. salute. Really great. Actually, the Dr. Sarang has mentioned that you have to talk on this. I was not prepared for that, but still I said definitely I will enjoy this session, because Don't worry, don't worry. Yes, please continue. Please continue. Yes, sir. So Then thank you so much, sir. There is nothing to talk again, because vaccines and their role everyone knows, and it has become more popular now because of the COVID situation. So thank you so much, sir, for forwarding this platform. no. Is there any vaccine for H3N2? Sir, the vaccines are there, but still, just like in COVID-19, we come across with the many vaccines by the many manufacturers, and just like Moderna, then Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer. So there are so many objections by many of the users that this vaccine is not good, that vaccine is not good. And because the reason was only they are prepared in a very short time. And as we know that the vaccines and their clinical trials, and it will take more time, because we should know that long-term effect of this vaccine, and then only we can believe on this. That was the reason why that vaccines are not believed by the people. That may be one of the reasons that they are not accepted it. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Dr. Hitesh Jani has some network problem there in Gujarat. So I would like to request Professor V.K. Agnihotri, sir. Welcome, sir. Excellent lecture, Dr. Kendre. But please do join whenever you have time. Please do join. Yes, sir. And please, sir, just inform me a little earlier, so that I can prepare very well. Daily. And with some scientific study also, because thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, Dr. Professor Pawan Sharma-ji, and thank you, Dr. Prakash Kendre-ji. Really, it's a great pleasure that you joined today with a very short invitation. We can understand that that's why you could not prepare your PPT of that level, from which level you are talking about. So very naturally, we are scared not to have your that knowledge, depth of knowledge. Of course, the area you touched, you shown that how much inclined you are towards our Swarna Prashan. Irrespective of the nomenclature, it can be given as BOON, vaccine, a very strong tool of immunization, whatever the person of medical fraternity can put any word, but the result is the same. Real means it is nowhere negative if a person is taking, so it is definitely giving sort of say immunization or some boosting of the body build development, mental development, and can be considered as our WHO's program, which world accepted
that like pulse polio or polio drops. Yes, correct, Because correct, sir. Yes. on daily basis, if 2 drops of polio, 2 drops of our Chyawanprash, and then again, since the pediatricians are very much here during our first webinars part, we all know that the dose of the means medicine is decided as per the young formula, especially for the kids. So very naturally, the dose of Chyawanprash may also be say calculated and decided right from the day hour 1 to increasing age 1, 2, 3, 4, 5 years up to 16th years. So your approach towards the acceptance of this ages old approach with the Chyawanprash is in favor of our say literature and now in practice and today's scenario. So I appreciate your approach, and your favor towards Chyawanprash is almost Sir, welcome. for my children, sir, for my children also, I have given this Chyawanprash prepared by Dr. Sarang Deshpande. I know in Maharashtra it is definitely in practice, because Maharashtra, Gujarat, these are having a very strong Ayurvedic institutions, and of course having a very large network of Ayurvedic dispensaries and good centers. So and they're also provoking it in a very positive manner. Our Sarang Deshpande sir is also very much with us, and I think he is behind with all your presence, making your presence in towards today's program. And a number of persons, we started having a good attendance, say somewhere 31 or so, and still we are having. So what questions we just put after our first part of the webinar, means the 6 and 10, and now this is 6:11, because now I think by now all the guest speakers have completed and presented their all well experienced and researched say knowledge to a platform. We are here to have questions and doubts from our spectators, from our listeners. Though it is an ongoing process, it's a live presentation, and also on YouTube, and also be available all the time in our archives. So as we put some questions, especially our very important question is that should it be decided, and why should it not be decided on the basis of the body weight of the say child instead of the age of child, or taking both the factors into consideration regarding the deciding of the dose as a year-wise, month-wise, age-wise factor. This is my one query. And at the same time, I also put one query that which preparation they are using in their hospitals, clinics, whether they are preparing, and if they are preparing, they are getting the ingredients at of good manufacturers companies, or they are getting the prepared Chyawanprash Bindu, because we know one company is giving shayad the Doodh Tapeshwar or Jandu 1400 rupees of say some 30 ml or something, and others are giving all about 200 rupees. So there is a great difference in the market price, and I don't know to which extent they use the ingredients, especially the Chyawanprash. So it's always a question, because we are here for the greater cause of the not only saving the life of the newborn, to increase mentally, socially, physically healthy, because message socially will go to the society that this family, this couple's baby is stronger and having a say Chyawanprash dose for last couple of months or so. So learned guest speakers, I don't know to whom I should refer this our query, but if I go through the participations list, I've got our Harish Kumar Singhal Saab with me, and Dr. Snelata Donola is with me. Of course, Prakash sir is also very much with us. So what Sir, I think, sir, yes, please. yes, sir. Actually, I just try to answer the question for both questions. No, First question that you have not. Yeah. Okay. Yes. Just the weight and age. I think definitely the age and weight is the factor that we should consider while dosing.
because looking at the new age baby and even weight, everywhere when you are calculating the dose of any medicine, the weight and age factor is always considered. And now this is concerned with the nanoparticles, which is having large surface area, having some, because the surface charge, surface functionality is the main factor in the this nanoparticle, gold nanoparticles, or so-called Swarna Bhasma. So I think that is because we are looking at this Swarna Pashan in a scientific way. As it is mentioned, it is a nanoparticle. And that functionality with respect to the body age and surface area, it is also the direct, it is having the direct concern. So the dose should be calculated, or dose should be measured on the basis of body weight and age. And I think what the cost factor you are saying, so that may be the way by which they are making this. I don't know this in Ayurveda, there are called as the bhavna something. But even though today's date, for the purpose of stability of the preparation, because there are so many factors, environmental factors are concerned, and even the what we are consuming, we are consuming a lot of things in a day. So they have the different type of techniques to prepare, and maybe in order to maintain the sterility and cleanliness and even the quality of the product, it may have the different cost of that product. So it may varies, because traditionally it is prepared, no doubt, but then the people perception are now towards the hygiene and cleanliness, and they may think that, and maybe because of that they have set up of facilities which are in that way, and just because of that the cost may be there are cost differences in the market for the same product. Thank you, sir. Thank you for making a very clear opinion regarding the age and weight. Of course, in special reference to the dose calculating. No doubt, I have visited the Ashtanga Ayurveda Mahavidyalaya there in Pune, and I found that a few things pertaining to the maintenance of hygiene and, of course, sanitization is a must. So they were using, because all are, say, kids, and they are having, say, almost 1 year to 5 years. Especially the main crowd was 1 to 5 years, because every couple is interested to maintain 5 years of age of their progeny, means safely. Then they develop the immunity by their own efforts. So I found that in that manner of maintaining the sanitation and hygiene, separate droppers be used for each and every kit. It's not costing much. This can be done. Of course, they are using gloves itself, and the pediatrician, I mean the associate professor, assistant professor of our Balrog department are always there. They are getting with their students team and the PG scholars team. So that is not question. The question is, if, as you told, that the bhavna, it's not a matter of bhavna. Simply Sonabhasam, whatever the dose they are preparing, say for 100 kids or so, they are having the ratio, how much Sonabhasam is to be taken, how much honey and how much ghee. Of course, it is in a 1 to 2 ratio. So then Mardhanam Gulvardhanam formula they prepare, and it can be prepared there in the their own clinic or their own hospital unit itself, and it can be poured in a very safe, sterilized, container, and it can be used in a divided dose as per the we are having Sonprashan camp. Usually we are having Sonprashan camps on every falling of every Pushya Nakshatra. So this is true, but whatever the ready-made preparations available in the market, they are costing in a different prices. But how much they are maintaining the ratio which has been mentioned over the level of that preparation, it is a little bit matter of to be means verified, because we are dealing with the kids, and they are the rarest of the rare. Our point of worry is this one. I'm saying that our webinar platform is now blessed with our Professor Sadhna Vaikarji, the Dean of our Bhopal College, after a long gap, probably after the Holi. So we will definitely be having blessings from her. Of course, a very important topic of today's webinar. Both the webinars almost near to the same topic, whether Sonprashan is to be carried out in an Ayurvedic manner. It has been discussed in the ages back text, and also in a form of the vaccination effect
if it is done on daily basis or at the periodicity. So I would like to have a small comment from Dr. Our Snehata ji, if she is here, because she is definitely dealing with the kids on regular intervals. So if she is here, because a few doubts may also be say addressed in her speech itself, but still I am keeping these points in our mind and very open in that group discussion. So for the newer say knowledge holders comments, I am here to have some information from our new faces, those who have joined. I would like to start with Dr. Deepti Sharma and Dr. Leena Karekarji. If they are there in our list and they have joined, I would like to have a good comments on this very important topic, which is definitely pertaining to the kids and pediatric department, with the department. Moreover, it will be our comfort if persons, those who are having to say something to a platform, please raise your hand so that I would be in position to call them, invite them by their name itself, and we will be saving the time. We are hopeful to finish our complete our this webinar by 10:15 or so, getting all the very important inputs from all the learned distinguished guests and the floor dignitaries of today's webinar. So Dr. Manohar Laheja ji is also very much here. I am Namaskar, sir. Namaskar. I am seeing, and it's a pleasure that our great persons are here. Namaskar. Namaskar. Sir, would you like to say something on today's webinar topic? Or the discussions of our guest speakers and from also, yeah. सर आप कुछ कहना चाहेंगे आज के वेबिनार पे अपने विशेष अनुभव और विशेष कथन के साथ में? आप अनम्यूट कर लीजिए सर. यस. Very good and important topic is Ji. going on. We congratulate too much. It is Thank very you, sir. important. We are planning and we should propagate everywhere the vaccine, Ayurvedic vaccine for children. It is very important nowadays to prevent the side effect of the modern medicine, modern vaccines. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you for your great words. It's just like great wishes. Of course, all the 4-5 guest speakers, none of them informed to this webinar from any of the corner that any side effect is being seen practically, physically in the clinic, or informed from the couples, or scientifically assessed. So it is so safe. It's difficult to say that it is an Ayurvedic vaccine or it acts as a vaccine. I think it is vaccine and rejuvenating factor in disguise. Not only it is is a vaccine because it is given in a smallest quantity, but it is also resulting in the form of the rejuvenating factor or a rasayan pratinidhi, we can say, right from the very starting of the life. Sir, you are muted. Pardon? I invite Professor Sarnaji to have some blessings from on this topic. Could not hear. She's Pardon. yes, she's left. Well, meanwhile,
as she is taking time to join, I would like to call Professor Dr. Nishant Shukla ji from Jamnagar, Gujarat. A very important which has been discussed and poured with the knowledge. Dr. Professor Nishant Shukla ji is here. Namaskar. नमस्कार सर. Namaskar. नमस्कार. पहला जो सेमिनार था स्वर्ण प्राशन का, ये इनमें जो डिटेल्स दी गई वो इंफॉर्मेटिव थी. खास करके जो टॉक्सिसिटी स्टडी की बात की गई, दैट वाज रियली इम्पोर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव. और ये आज के लिए, आज के संदर्भ में ये उपयोगी भी है कि भाई इफेक्टिविटी और टॉक्सिसिटी दोनों जो है, इफेक्टिविटी होनी चाहिए और टॉक्सिसिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. तो ये एक क्लियर आंसर है IMA के लिए. सेकंड थिंग, ये थोड़ा सर मैं टाइम ले रहा हूँ 2-1 मिनट का ज्यादा. I have gone through your message in the chat box. You have very clearly mentioned in detail. So I have gone through meanwhile when the webinar was going on. ये एक गोल्ड सोल के लिए, थैंक यू. गोल्ड सोल के लिए ये इटली में एक ये वर्क जो है ये हुआ है, ये साइटेड वर्क है. और उसमें इन्होंने जो ऑब्जर्व किया कि भाई इनेट इम्यूनिटी को ये पोटेंशिएट करते हैं. ये मुझे आइडिया इसलिए आया कि हम वैक्सीनेशन का बेसिकली आइडिया सुश्रुत का है. आज हम भले ही रॉबर्ट कॉक को और इसको धन्यवाद दे रहे हो, पर बेसिकली इम्यूनाइजेशन या फिर वैक्सीनेशन का आइडिया सुश्रुत का अलर्क विश्व में. ये पहले भी मैंने बात की और आपने उसकी स्वीकृति भी दी है. पर उसके बाद ये आयुर्वेद में प्रचलित नहीं हुआ और स्वर्ण प्राशन जैसी विधियों का जो है वो प्रचलन हुआ है कि जो इनेट इम्यूनिटी या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी या ब्रॉड स्पेक्ट्रम इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं. तो बेसिकली ये होस्ट डिफेंस को जो दो मीन्स है, एक जो है ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी और स्पेसिफिक इम्यूनिटी. तो स्वर्ण प्राशन और ये जो विधाएं हैं वो ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी को बूस्ट अप करती हैं और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम इफेक्ट इसकी जो है ये रहती है. दिस इज फ्रॉम माय साइड. थैंक यू वेरी मच सर. और ये एक मैंने अभी जो थोड़े समय पहले मैंने ये पढ़ा था वो मैंने अभी जो है ये शेयर किया है कि गोल्ड की इनेट इम्यूनिटी को ये बढ़ाने की ये पोटेंसी है. तो ये कहीं ना कहीं हमारे स्वर्ण प्राशन का ही एक ये स्वीकृति है कि हम उससे ब्रॉड स्पेक्ट्रम इम्यूनिटी केवल स्पेसिफिक डिजीज नहीं पर सभी डिजीजेस के लिए हम पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रसायन इफेक्ट्स जो है वो डेवलप कर सके बॉडी में. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. अब हमें लगता है सच्चाई ये हो चुकी है कि हम अपनी बात को यदि सामने वाले के समझने के योग्य बना के समझा सकें तो हम सही हैं. यद्यपि हम सही हैं, थे और रहेंगे, लेकिन अब ये शब्द उनको बता दिया कि हमारा गोल्ड का नैनो पार्टिकल इनेट इम्यूनिटी के लेवल पर काम कर रहा है. अब आप आइए अपनी बुक्स ढूंढिए और तय करिए कि नहीं कर रहा है. Something of the sort. For that, we must develop that type of research attitude for them that we are right, we had been right, and we will remain right. So it's a great message to IMA. IMA is simply Indian. I send this message to whole world. Indian Medical Association is smaller unity for world. So the fact is that if anything is right, आप truth को कब तक बना करेंगे? Madam Snehlata ji is very much with us, and since in a very beginning of the start of our group discussion, we raised a few points. I do agree that you have already touched so many sectors, but still some clarification will make us more sound regarding taking certain prashan, this sanskar or dose right from the 0 hour age to 16 years of age. Your presentation was very nice, very informative, and has gone to the deepest sector of Ayurved lovers and also those who are going to start Ayurved loving. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. One of your question is like, why you have fixed with age, why not weight, right? No, I am just querying whether it is calculated by weight, age,
or simply drop, whatever it is. Sir, The many dose is factors are there. Yes, Yeah. many factors are there when we are giving when we are fixing the dose. फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ बच्चों को देती हूँ वही डोज जो 1 साल के बच्चों को देती हूँ और वही डोज जो है 6 महीने के बच्चों को देती हूँ। तो कभी कभार जो है 6 महीने वाले बच्चे को उसमें कुछ दिन देने के बाद जो है वही डोज क्या होता है, जैसे अंदर अग्निवर्धन हो जाती है, जैसे अग्नि का वर्धन हो जाती है तो फिर उनको दाने दाने से निकलना या आंखों में रेडिश आना, इस तरह से भी हमको देखने को मिलता है। तो एज इज नॉट द फैक्टर, वी हैव टू कंसिडर अग्नि बल वय। और जब हम न्यूबॉर्न बेबीज को हम स्टार्ट कर देते हैं तो उसमें एक्चुअली व्हाट आई डू इज 1 mg के कैप्सूल्स हम बना लेते हैं। वो एक कैप्सूल बनाते हैं, उसमें 1 mg की स्वर्ण भस्म रहेगी, साथ में वचा, एष्टि मधु, ब्राह्मी, सितोपलादी, इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू सीजन। अगर सीजन गर्मी है तो थोड़ा एष्टि और सितोपलादी ज्यादा देंगे, एंड देन सर्दी ज्यादा होती है तो उसमें वचा और थोड़ी सी पिपली वगैरह वो ज्यादा देते हैं। नवजात शिशु को भी अगर हम देते हैं जातकर में तो उसमें उस 1 mg की 250 mg की कैप्सूल्स होती है, विच इंक्लूड्स 1 mg स्वर्णभस्म as well as these powders. So उसकी 1/4 or 1/3 depends on the weight of the baby again, कि हम बर्थ वेट ही देख पाते हैं क्योंकि उस समय में अग्नि नहीं देख पाते न्यूबॉर्न बेबी का। तो अगर 2 से 2.5 किलो का है एंड दे आर नॉट प्रीमेच्योर एंड दे आर नॉट IUGR and no resuscitation is required and they are absolutely fine with normal care and the baby cry is there, then we can definitely give, after washing our hand properly with proper aseptic measures, we can give it. So जैसे ही हम देते हैं, क्योंकि सर इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो एमनियोटिक फ्लूइड भी एस्पिरेट कर लेके आते हैं या मेकोनियम भी एस्पिरेट करके आते हैं, उनको क्लीन अप करते हैं। जब वो करने के बाद भी बच्चा जिंदा रहता है तो वाई नॉट स्वर्णप्राशन से बड़े आराम से कर लेते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं। बट द थिंग इज एसेप्टिक मेजर से हमें करना होगा कि अपनी जो चटाने वाली उंगली से कोई पैथोजेंस ना जाए। एंड एक्सेप्टेबिलिटी भी बहुत अच्छा रहता है बिकॉज दीज रूटिंग, सकिंग रिफ्लेक्सेस एंड swallowing रिफ्लेक्सेस आर देयर फ्रॉम बर्थ, सिंस बर्थ। तो जैसे ही उंगली से हम चटाते हैं तो वो दे सक्स ब्यूटीफुली, दे सक। तो सक करने के बाद फिर देन वो आई ऐड इन दिस कि अगर हम इसको चटाने की जगह जो ड्रॉप फॉर्म है, अगर हम उसको ड्रॉप फॉर्म में देते हैं, दैट इज मच मोर कन्वीनियंट टू गिवन द चाइल्ड, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव और लाइक टू एनीवन। हर चाइल्ड को हम बार बार उंगली चटाएंगे और बार बार हम उंगली को वॉश करेंगे तो इट इज इम्पॉसिबल टू मेंटेन द aseptic proportion. So this is the things why the drop form is preferred. In our universities, the solution was prepared in the drop forms, and the drop forms each drop is consisting 0.05 milligram, and drop by drop we can given by the weight as a जो weight and the age जो the child जो भी है उसके बेस पर हम उसको देते हैं। तो वहाँ ड्रॉप अगर हम देते हैं, आपका 1 month का चाइल्ड हमने 1 ड्रॉप दिया, हमने 6 month का चाइल्ड हमने 2 ड्रॉप्स दिया, हमने 2 साल का चाइल्ड है वहां पर हमने 3 ड्रॉप्स दिया, 4 साल का चाइल्ड है हमने 4 ड्रॉप्स दिया। तो इट इज मोर कन्वीनियंट एंड ईच ड्रॉप कंसिस्टिंग द सेम अमाउंट ऑफ द मेडिसिन ऑफ द गोल्ड भस्म विच इज रिक्वायर्ड फॉर दैट एज ग्रुप। तो इट इज मच मोर बेटर कि वी हैव टू गिवन द डोजेज एज इन द ड्रॉप फॉर्म्स, क्योंकि वहां हम कोई भी हाथ टच नहीं कर रहे हैं, कोई स्पून टच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग कैन बी कंटेमिनेटेड। ड्रॉप्स आपने बनाई, आपने स्टेरल वाटर में रखी हुई है, बोतल में रखी हुई है, आपने फ्रेशली प्रिपेयर किया है, फ्रेशली आप दे रहे हैं, कोई भी साइड इफेक्ट्स अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। हम 90,000 को ला चुके हैं ऑलरेडी। हमारी 4 थीसिस पब्लिश, 2 थीसिस पब्लिश हो चुकी हैं, 1 प्रोजेक्ट एंड द 1 इज अंडरगोइंग दिस डायरेक्शंस। I think this drop form is the much more better as compared to the other methods. Thank you, sir. Thank you. Thanks to both the participants
those who gave the Sorry, good sir, madam, to information interrupt to you. our this whole of the discussion on my doubts or on my query. But Madam opened one very new point also, saying Agni, बल और वय. तो वय तो ठीक है, पता है हमको. बल भी देख सकते हैं, इमेजिनेशन तो नहीं हो रहा है, बच्चे का डेवलपमेंट कैसा है. अग्नि की बात आपने कहा, अगर ओवरडोज हो गया तो दाने वगैरह निकल सकते हैं, कुछ भी है. क्या एक ये भी फैक्टर डिसाइड कर सकते हैं एज पर एज कि बच्चे को भूख कितनी लगती है, मदर उसको कितनी बार रूटीन में नॉर्मली फीड कराती है या एक्सेस कराना पड़ता है आफ्टर आपके च्यवनप्राश के इंट्रोडक्शन के 3 times 4 times या in an interval of 1.5 hours or so. Apart from the recommended, it can also be a one tool or one parameter that whether the intensity of that Jarshagni or the Agnival is normal, better, or increased anyway. But at the same time, as Dr. Singh have told that dropping system is better, and I'm also seeing that in the present scenario, definitely dropping is rather safe and maintaining the hygiene. But at the same time, whatever the contents we are in a form of we are using as a drop, it should be well shaked before use, and so that the homogeneity of the contents be there, so that the even a single or 1 or 2 drops will, as he told, be remaining and representing the same contents, and in the even a single drop or 2. So because it's a viscous, much more viscous, because the presence of the ghee and honey, so this can also be taken as a precaution, because in leh karma we can make a mix in the, say, utensil, even the certain pot, rubbing, making a paste type, just lapsi or any leh dave, and then we can give on the tongue. But of course, the hygienic condition of the index finger, which may not be used directly for the second one before properly cleaning and making it clear. So dropper is good, and homogeneity should be observed, so that every drop should contain the same, say constituents of that preparation. I think Dr. Nitin Urmalia ji is raising his hand. Definitely, Sir, I add in this one something. I invite you, Dr. Nitin Urmalia ji, please do join. Yes, thank you, sir, for giving me opportunity to present my view on among all. So here, as we know, presentation were very nice, and I just joined previously. Then I impressed by this topic this one. तो इसमें सर मैं यही बोलना चाहूंगा कि स्वर्ण का जैसा बोला गया है, थोड़ा सा मेरा डाउट है, इसका एक्यूमुलेशन होता है सर ब्रेन में, स्वर्ण का बच्चे के ब्रेन में, ब्लड में, हार्ट में एंड जॉइंट्स में होता है सर. तो जब पुष्य नक्षत्र में हम देते हैं, हर पुष्य नक्षत्र में देंगे, तो वो तो ट्रेस अमाउंट रहता है. एक्चुअली इसकी बॉडी की नीड इसकी ट्रेस अमाउंट है. लेकिन अगर हम कंटिन्यूअस इसको दे दें, महीने 2 महीने 3 महीने हम लगातार देते हैं, तो हम कैसे जज करेंगे कि ये एज ए दूसरी विष हो गया है या इसका डोज ज्यादा हो गया है, तो थोड़ा इसकी टॉक्सिसिटी डेवलप हो गई है बॉडी में. इसके लिए क्या पैरामीटर्स हैं, ये थोड़ा मैं जानना चाहूंगा मैडम लोग से. कि डॉक्टर हरीश कुमार Singhal Saab, I think you are the right person to point out this. I don't think that it will go to the category of Dushivis by using any amount, because the body of kid is so fast developing, it will not allow that dose of 1-2 drops even on daily basis. Yes, sir. Sir, I recommended, and all the speakers. Yes, sir. I recommended, as well as all the speakers recommended, that protocol be made by the all over India pediatricians, Ayurvedic pediatricians, in the direction of the Professor Avani Kumar, because कि हम जब सॉल्ट्रेशन कराते हैं, तो it is not feasible कि हम एक बच्चे को दें, 2 बच्चे को दें, क्योंकि हमारे पास में 2000 children on every पुष्य नक्षत्र होते हैं. Yes. और हमें अगर हम किसी बच्चों को हमें 2000 बच्चे देना है, so it is not feasible to given the capsule, break the capsules, given the sonopration, mix the sonopration in the जो है honey and the जो है yes, and then we give it. It is not feasible to us. So we have to prepare the drops, and in the direction of the our own vice chancellors also, and easily distribution was given.
Sir, as you asked the questions, if you given the Yes. suppression for a longer period, then there is Yes, any yes. side effect, it is recorded. Yes, 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 yes. Till date, क्योंकि हम 2016 से हम सप्रेशन लगभग करा रहे हैं, और जी, जी। जोधपुर की पॉपुलेशंस और जो है इवन एम्स जोधपुर के अंदर भी हम सप्रेशन करवाते हैं, जी, और जी। वहां पर भी ये चीज देखने के लिए हमें अभी तक कोई रिकॉर्डेड नहीं है कि इवन जैसे मैडम ने कहा कि कुछ बच्चों के अंदर जो है स्किन इन्फेक्शन, स्किन जो है रिजेक्शंस जी। देखने के लिए मिलती हैं। सर हमारे जी, यहाँ जी, पर जी। कोई भी किसी भी तरीके की रिजेक्शंस देखने के लिए नहीं मिली हैं, नॉट रिपोर्टेड सिंगल रिजेक्शंस, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है जी। जो इसका एडवर्स रिजेक्शन का फॉर्म है वो हम अपने साथ रखते हैं, और जो भी हमारे पास में आती हैं आइदर जी। रूट्स का जो भी है वो हम रिकॉर्डेड करते हैं। हमारा एक ही जी। इंस्ट्रक्शंस होता है सप्रेशन देने से पहले कि एम्प्टी स्टमक होना चाहिए, हाफ एन आवर जी। पहले कुछ नहीं देना चाहिए, और हाफ एन आवर आफ्टर गिविंग द सप्रेशन कुछ नहीं देना चाहिए। ये हमारी 2 रिकमेंडेशंस रहती हैं कि आप 1 घंटे का वो रखें और उसके बीच में कुछ ना दें। तो अभी तक तो जी, जी। कोई सर ऐसा साइड इफेक्ट रिपोर्ट नहीं किया गया, और हमने सप्रेशन जो है वो हमने पंचगव्य घृत से भी ट्राई किया है, हमने ब्राह्मी घृत से भी ट्राई किया है, गोघृत से भी प्लेन ट्राई किया है। इवन हमने स्वर्ण भस्म को हटा करके सोचा कि ऐसा तो नहीं कि इसका प्लासिबो इफेक्ट रहा हो, कि स्वर्ण भस्म जी, जो जी। प्लासिबो इफेक्ट दे रही है, इसलिए मधु और घृत का ही हमने केवल प्राशन करा के देखा है। तो उसके कंपैरेटिवली जो रिजल्ट्स हमें ज्यादातर देखने के लिए मिले वो स्वर्ण भस्म के साथ में हमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिले, और वो स्टडी सक्सेसफुल है। अभी जो प्रेजेंट स्टडीज चल रही हैं उसमें भी हम जी, ये जी। देख रहे हैं कि जो ब्रेन के ऊपर कोई इफेक्ट आता है या नहीं आता है, जी, उसके लिए जी, वैस्कुलर जी। इंटेलिजेंस स्केल के ऊपर हमने उसको इंक्लूड करते हुए हम देख रहे हैं, और अभी तक जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वहां जी। आईक्यू इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन जी, जी, अगर जी। हम इसको लॉन्गर ड्यूरेशन तक देते हैं तो रिजल्ट हमें बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। मैडम ने भी देखे, मैडम ने काफी सारा एक्सपीरियंस है इसमें, क्योंकि मैडम के अंदर काफी सारे लोगों ने पीजी किया है, और जी, जी। मेरे साथ में जो है डॉक्टर प्रेम प्रकाश व्यास जी जुड़े हुए थे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, और उनके जो है हम डायरेक्शन में काम करते रहते हैं। तो जी, जी। डेफिनेटली हमें अभी तक कुछ नहीं मिला है, और अगर कोई भी चीज मिलती है तो वी रिपोर्टेड टू द फार्माकोविजिलेंस सेल। यस, 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 यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हरीश सिंघल साहब फॉर आंसरिंग द एंड मेकिंग द डाउट क्लियर ऑफ आवर डॉक्टर यस, नितिन यस। नोरमाली। अब सर, डॉक्टर साहब इसमें आपने मैं सिंघल भी साहब एक आपने एक बात जस्ट सर, मिनट मैम, सर, मैम नितिन जस्ट नितिन जी के मिनट लिए मैं भी एक बात करना चाहती हूँ। मैम, जी, एक जी। सेकंड मैं Sure, sure. हरीश सिंघल जी से एक बात कहना चाहूंगा। जी, आपने जब ये बात रखी कि बच्चे को और सब बढ़िया, कोई रिजल्ट खराब नहीं मिला, तो ऑन एम्प्टी स्टमक होना चाहिए और उसको आधे घंटे तक फीड नहीं करना चाहिए। अब जी। आपके यहाँ तो एक पुष्ट नक्षत्र में 2000 बच्चे आते हैं। अब बच्चा तो रोने चिल्लाने लगेगा, तो आखिर कितने मदर तो अगर वो माने टॉप फीडिंग पर नहीं है, मदर फीडिंग पर है, तो फीड तो करा देंगे। तो ऑन एम्प्टी स्टमक इज प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस दैट ऑन एम्प्टी स्टमक 10 बच्चों को लेंगे, 15 को ले पाएंगे, बाकी तो बच्चे लाइन में लगे रहेंगे। 2000 बच्चों को सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक चलेगा। इसलिए हमारे काउंटर सर एक सेंटर पर 7-7, 8-8 काउंटर्स होते हैं सर। एक सेंटर पर 7 to 8 काउंटर्स होते हैं, ताकि बच्चों को वेट ना करना पड़े। राइट, तो बच्चों को भूखे पेट नहीं रहना पड़ेगा। होती है कि बच्चे अच्छा, थैंक यू। बच्चों को वेट ना करना पड़े, और हाफ एन आवर पहले कुछ नहीं देना, हाफ एन आवर बाद में कुछ नहीं देना है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। यू मेड वेरी क्लियर। जी मैडम साधना जी, आपका स्वागत है। आई वाज जस्ट आई एम सॉरी दैट आई हैव टू जस्ट चेक यू देयर। यू प्लीज कम एंड गिव योर ब्लेसिंग्स टू अवर टुडेज। सर, मुझे जो एडवर्स थोड़ी बहुत मिले हैं वो बिकॉज ऑफ रेगुलर यूसेज, नॉट ओनली ऑन पुष्य नक्षत्र। रेगुलर देने के बाद जो है ऐसे में मिला है, और नॉट ऑन मोर केसेस 1 in 20-25 जिनका पित्त प्रकृति वाले जो बच्चे होते हैं उनमें, या जब सीजन जो है पित्त डोमिनेंट वाला हो, या उस समय में हमें इस तरह से मिलता है, नॉट ऑन रेगुलर बेसिस। मैम, एट व्हाट एज ऑफ द चिल्ड्रन? उन बच्चों की उम्र कितनी रही होगी? मोस्टली सर इन्फेंट के अंदर वाले बच्चों को ही मिलेगा। या 1 year लोप या 2 years लोप बच्चों को मिलता है ऐसा, क्योंकि पैक्टिक विकार इतना नहीं मिलते। पैक्टिक विकार बाल्यावस्था तो कफज वृद्धि के लिए माना गया, प्रीडोमिनेंसी ऑफ द, इसलिए तो वहां पैक्टिक होना predominant, of course that is predominant, kapha is predominant. It's not, it doesn't mean that vata and pitta is not there. Predominance only then when it will be very hungry. Sir,
कफा प्रिडोमिनेंस मतलब अगर वो चिप्स पैकेट या कुरकुरे खाएगा तो पित्त तो बढ़ेगी सर। अब इन्फेंट कहाँ आ रहा है? इन्फेंट गुटकुरे नहीं खाएगा मैम। नहीं, इन्फेंट फिंगर फूड्स लेते हैं सर, इन्फेंट्स भी फिंगर फूड्स लेते हैं, जिनकी 2, 3, 4 दांत आते हैं, आने के बाद कुछ ना कुछ वो लेते ही हैं। एंड दीज, ये बच्चे बहुत स्मार्ट हैं सर, अब के जो बच्चे हैं दे आर वेरी स्मार्ट। आप मदर हैं, बच्चों की कॉन्टेक्ट रखती, पीडियाट्रिशियन है, योर वर्जन इज स्टेट वर्दी, so we all accept it. And now I will request our respected Sadhna madam ji, please before concluding the webinar, we are in a dire need of your blessing, so please come with your धन्यवाद सर। नमस्कार सर आप सभी को नमस्कार। आप सब, मैंने इतना अच्छा स्वर्ण प्राशन में चर्चा हुई और दोनों तरफ से हुई, उसका प्रिपरेशन, स्वर्ण प्राशन प्रिपरेशन कैसे करना है, उसका यूज कैसे करना, बालकों में उसका क्या यूज होता है, उसके इफेक्ट्स क्या है, उसके पथ्य उसका डोज, इसके ऊपर काफी चर्चा हुई है। इसके लिए मैं स्वर्ण प्राशन, हमारे यहाँ, मैं नागपुर में थी श्री आयुर्वेदिक कॉलेज में, आज मुझे लगता है 20 साल से वहां पर हो रहा है। मैं तो काय चिकित्सा डिपार्टमेंट में छोटी थी, पर बाल रोग में एक 15 से 16 साल या 20 साल पहले ही स्वर्ण प्राशन जब से सीसीआईएम ने चालू करवाया था, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो हमारा आयुष डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उनके तरफ से सेमिनार्स लेके इसका पूरा ट्रेनिंग हुआ, उसके बाद केरला में ट्रेनिंग हुआ, और इस तरह से हमारे श्री आयुर्वेदिक कॉलेज में स्वर्ण प्राशन आज 20 साल पहले भी बोला तो स्टार्ट किया गया था। और ये भी ऐसा हुआ है कि स्कूलों का सर्वे करके हर एक स्कूलों में इसका माहिती देकर, यानी उनका सब बताकर, स्कूल के पूरे बच्चे हमारे यहाँ आते थे। जैसे अभी कहा गया 2 से 3 हजार एक पुष्य नक्षत्र में बच्चे आए हैं, और लाने वाले वो स्कूल की क्लास टीचर और टीचर भी होती थी, बच्चे और पेरेंट्स भी होते थे। तो नागपुर में तो इसका काफी अच्छा रिजल्ट मिला सर। उसके बाद गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज और बाकी कॉलेजेस ने भी स्टार्ट किया। थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड, थोड़ा सा जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तब नागपुर में आईएमए जो एसोसिएशन है एलोपैथी वालों का, बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने पेपर में इसके विरोध में वो चलाया वीकली कि ये जो आयुर्वेद वाले कर रहे हैं स्वर्ण प्राशन, ये गलत है। उनका कहना था कि जब न्यू बॉर्न बेबी को हम लोग, यानी उनके हिसाब से, पानी भी नहीं पिलाते, यानी मदर का ही मिल्क उनको देना चाहिए, 2 साल तक उनको पानी नहीं देना, कोई 1 साल तक बोलते, पानी तक हम देने को अपोज करते, और आप न्यू बॉर्न बेबी को ये खिला रहे, ये दवाई दे रहे जिसमें स्वर्ण भस्म है। वो तो पहले सबसे पहले तो उनका स्वर्ण भस्म के लिए ही अपोज था कि आप बच्चों की किडनी खराब कर रहे, आप उनका डाइजेशन खत्म कर रहे, और घृत और शहद जो दे रहे वो तो विषाक्त होता है। ये सब बातें उन्होंने बहुत ज्यादा फैलाई। उसके बाद हम लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके स्वर्ण प्राशन कैसे बनता है, उसका भस्म क्या होता है, उसके ग्रैन्युल्स कैसे बॉडी में ऑब्जर्व होते हैं, इस तरह से हम लोगों ने भी उनको अपोज किया गया, और तब जाके उन लोग शांत हुए, और तब और उसका रिजल्ट उन्होंने देखना चालू किया। उनकी एक टीम हमारे यहाँ आती थी, जो हम लोगों ने जैसे क्राइटेरिया जो बनाया था कि जिन बच्चों को सर्दी, खांसी, बुखार, ये जो कंटिन्यूएशन जिनको होता था, डाइजेशन, भूख लगना, ये सब पूरा रिकॉर्ड, एक स्टैटिस्टिक हम लोगों ने बनाया था, और वो उनके सामने जब हमने रखा तब जाके उन लोग शांत हुए, और उनको लगा कि नहीं ये है। हम लोगों ने ये भी उनको बताया, आपको भी सबको ही पता है कि ये तो अभी हमने स्वर्ण प्राशन चालू किया, पर हमारे पुराने जमाने में जो घर में डिलीवरीज होती थी, हॉस्पिटल में होती थी, तो 1 या 1.5 का जो सोने की जो भी चीज उनके पास हो, अंगूठी हो, मनी हो, उसको 1.5 उसके ऊपर उसका वो निकाल के, जूस निकाल के, पानी डाल के ही उन लोग करते थे, या घी या दूध जो भी अवेलेबल हो उस वक्त। वैसे तो न्यूबॉर्न बेबी को तुरंत शहद देने की हम लोगों में प्रथा है, क्योंकि शहद ये परगेटिव होता है, और अंदर जो भी उनका कफ वगैरह जो जमा होता है, तो उसको निकालने के लिए, मोशन करने के लिए,
पर इसके लिए भी मॉडर्न वाले नहीं बोलते कि उनको मधु भी नहीं देना चाहिए। तो ये तो उस जमाने से देते आ रहे हैं, तो इसलिए उन लोगों ने काफी विरोध किया और उसके बाद वो स्टार्ट हुआ और आज एक 15 से 20 साल से महाराष्ट्र में चालू है। आप लोगों को पता है कि महाराष्ट्र में आयुर्वेद कितना बड़ा है। मैम एक जानकारी और ये मैम, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट अपने एक्सपीरियंस शेयर किया और नागपुर के किस्से सुनाए। नागपुर में जो आईएमए के द्वारा विरोध हुआ था उसके बाद आपने कन्विंस किया और सब हुआ। क्या आपकी जानकारी में ऐसी कोई फैमिली या ऐसी बहुत सारी फैमिलियां आई जो खुद एमबीबीएस थे और उन्होंने स्वर्ण प्राशन के लिए अपने बच्चों को उसके बाद आए एमबीबीएस डॉक्टर सर, उन लोग भी आए सर। इसलिए इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आपके मुख से ये चीज कन्वे कराना चाहता हूँ कि अल्टीमेटली बाय योर मोटिवेशन, बाय योर सपोर्ट एंड सपोर्ट, दिस आई वांट टू एमबीबीएस डॉक्टर्स भी इसको मान रहे हैं और वो भी बोलते हैं कि हमारे यहाँ के पेशेंट को वो बोलते हैं कि आप जाइए वो डॉक्टर के पास, क्योंकि अभी हमारे यहाँ के जो बच्चे पास आउट हुए हैं वो भी स्वर्ण प्राशन उन्होंने स्टार्ट किया हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में बहुत रश होता है। 1000 इसमें जाएंगे तो उनको 2-2, 3-3 घंटे लग जाते हैं कार्ड निकालना, बनाना उनका रिकॉर्ड। तो उन लोग प्राइवेट वाले ने वहां 50 रुपए देना है, प्राइवेट में 200 रुपए देना है, टाइम तो बचता है। तो इस वजह से उन्होंने काफी यहाँ पे प्रैक्टिस। ग्रेट इंफॉर्मेशन एंड विद दिस नोट I think most of the information have come. I would like to send back this carry on proportion to Professor सारंग देशपांडे जी भी मेरे कॉलेज के प्रोडक्ट है, एमडी वही उन्होंने सीखा है स्वर्ण प्राशन बनाना। वो कहाँ है, दिख नहीं रहे, आउट हो गए। So thank you so much मैम, आपकी इस नोट से मैसेज बहुत दूर तक जाएगा। Me and Professor Pawan Sharma ji might be having a great say pleasure to have such information from your mouth. This is what this note, और एक मैं इसमें बात कहना चाहूंगी कि यहाँ आने के बाद, भोपाल में आने के बाद मैंने एलएन आयुर्वेदिक कॉलेज में स्वर्ण प्राशन चालू किया, उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा में चालू किया, उसके बाद श्याम कॉलेज में भी स्वर्ण प्राशन स्टार्ट किया था और वो चल रहे हैं। तो ये और बच्चों को सबसे ज्यादा तो हम लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल में करते हैं, पर हमारे बच्चों को जो इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा कि एम्स जोधपुर उसको अडॉप्ट किया हुआ है प्रोग्राम को। जी सर, एम्स जोधपुर ने मेडिकल साइंस has been adopted this program last from 5-6 years. Oh, good. This is an example. Even the IIT Jodhpur is also adopting that one. Not only that, AIIMS doctors have accepted this program, adopted program, but still the question was whether they, for their progeny, the MBBS MD doctors, they for their progeny, definitely sir. This is what the public is the same coming to Ayurvedic college hospitals. Or I share you the personal videos. Our point of pleasure, yes, our point of pleasure is that they have accepted, so they themselves now not standing with IMA's stand. सर इसमें उनकी गलती नहीं है सर, अपनी गलती है। उनको ये लगता है आयुर्वेद खाली एक से दूसरे को पढ़ाया जाता है, इसमें रिसर्च है यही उनको नहीं पता। 14 तो 15 सब्जेक्ट में हमारे यहाँ स्पेशलाइजेशन है, एमडी एमएस, वो उनको नहीं पता। उनको लगता है कि आयुर्वेद ये एक अंधश्रद्धा है, जो पुराने शास्त्र चल रहे उसी पे चल रहे, इनका कोई रिसर्च नहीं होता है। इसीलिए उनका जो माइंड में जो बैठा है ना आयुर्वेद का, गलती उनकी भी नहीं है। अपने जो झोला साहब डॉक्टर रास्ते पे बैठ के दे देते हैं, कोई भी दवाई लोग ले लेते हैं हजारों की, किडनी खराब हो जाती, जाएंगे उनके पास, बोला तो यही जाएगा कि आयुर्वेद लिया है, पर आयुर्वेद किससे लिया है ये नहीं पूछा जाता ना। तो इसीलिए गलती उनकी भी नहीं है। हमारा काम है सर कि हर एक ड्रग या हर एक जो भी रिसर्च है वो पब्लिश हो, लोगों तक जाए और लोगों को पता चले कि हमारे पास भी एक साइंटिफिक वैज्ञानिक शास्त्र है आयुर्वेद, ये हमें बताना बहुत जरूरी है। Ma'am, thank you so much, and all thanks to all the great speakers. इसमें ऐड करना चाहूंगी, time is increasing, we have already crossed the half an hour. सर 2 मिनट लेना चाहूंगी। धूत पापेश्वर ने एक टैबलेट बनाई है स्वर्ण प्राशन की, जो 30 टैबलेट शायद 4,500 या 5,000 की आती है और प्रैक्टिशनर को वो 1700-1800 में मिलती है। तो वो एक टैबलेट, जैसे अपनी बात हुई कि डेली यदि हमने दिया तो उसका विश केस, जैसे सर ने कहा, डॉक्टर हरीश सर ने,
कि डेली हमने दिया, परंतु वो जो टैबलेट्स है उनकी वो ऑटिज्म बच्चों में बहुत ज्यादा काम करती है सर, जिनका ऑटिज्म में जो ब्रेन ही मैडम उनका एनी गोल्ड कंपाउंड, मैडम नॉट इवन द गोल्ड भस्म, अगर हम गोल्ड कंपाउंड कोई भी यूज करते हैं ऑटिज्म चाइल्ड में जी सर या ADHD चाइल्ड में, दैट वर्क एक्सीलेंटली। इवन जो है मेरे पास में बहुत सारे चाइल्ड जो है सेरेब्रल पैल्सी के हैं, या जो बच्चे हमारे पास में डेवलपमेंटल डिले के आते हैं, वहां पर हम गोल्ड प्रिपरेशन जो भी यूज करते हैं, दैट गिव्स द वंडरफुल रिजल्ट्स, मिरेकुलस रिजल्ट्स। तो हाँ सर जी सर, ऐसे केस स्टडीज हैं मैडम, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस ऑन द simple medicines within 3 days serum amylase was coming down to the 50 from 1400. Within 8-day treatment, the patient of hepatitis A revert back to his normal positions, and the patient USG I have shared in any personally to you कि उसकी USG रिपोर्ट्स प्रीवियसली क्या थी और आपकी क्या है, दोनों मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, वो अंडर पब्लिश है पेपर मेरा। तो बहुत अच्छे रेस्पॉन्सेज हैं आयुर्वेद के, लेकिन सबसे बड़ी चीज कि हमको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए। अगर हम अपने साइंस के ऊपर बिलीव है तो डेफिनेटली वो रेस्पॉन्स करेगा ही करेगा। और इसी को देखते हुए एम्स के हमारे बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो हमारे बच्चों के को गाइड भी बने हुए हैं। ओके, गुड सर, गुड, Great informations you all distribute. सर काफी कॉलेजेस में दिल्ली भी चालू करवाया है सर, जैसे पोद्दार कॉलेज है मुंबई का आयुर्वेदिक कॉलेज, उसमें भी डेली स्वर्ण होता है जी डिपार्टमेंट का, क्योंकि उनका कहना है कि जो ज्यादा वीक बच्चे हैं उनको डेली देना जरूरी है, जो स्वस्थ है उनको पुष्य नक्षत्र में देना जरूरी है। तो इस तरह से उन्होंने डेली भी स्टार्ट किया हुआ है। So in this way, it has got two indications. Thank you, ma'am. So it means it has got two. Yeah, it has got two indications for healthy and for those who are lacking the proper say scale of the development. So it's great, yes, ma'am. With your kind words, I think that all the distinguished guests and our persons, those who involved and participated in our group discussion, they poured the fullest knowledge they are containing on this topic. So it became a great pleasure to our organizers of IRES today's webinar that we are reached enough to stand for the better and good merits of Swarnaprashan indications, its use in daily basis or especially on Pushya Nakshatra, so that no child born on earth, I should not limit in India, suffer from any of the physical and mental disease. It's a 4 point for autism and other such type of symptoms. So with these words, I thank all the our guest speakers, our participants. अग्निहोत्री जी, मैं शर्मा जी बोल रहे हैं। यस सर। अग्निहोत्री जी, मेरा ये अनुभव है कि जन्म से लेकर के 1 साल तक को बच्चे को सहपान में केवल मधु देना चाहिए, घृत नहीं देना चाहिए। अच्छा, घृत देने से उसके गले में और लंग्स में तकलीफ हो सकती है, मेरा ये अनुभव है। और देने के माध्यम में सलाका अच्छी रहती है, स्वर्ण सलाका या रजत सलाका। ड्रॉप से देते हैं वो तो अच्छा है, अंगुली से हाथ से नहीं दे, सलाका से दें। सर आपका सजेशन बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो घृत का शायद स्वर्ण के गुण के आधार पर, स्वर्ण भस्म के गुण के आधार पर ले लेते होंगे। बाकी वो फिजिकल जब मेहनत करता है, जिस समय वो दुग्धपान करता है, तो उसके माथे पे फोrehead पे पसीना आ जाता है। इट इटसेल्फ है फिजिकल लेबर। तो घृत का प्रमाण काफी कम होता है और बहुत ज्यादा होता है। घृत के लिए लिखा है घृतम पित्तानिल हरम, वो कफकर होता है। कफकर इस नवजात को कफकर चीज नहीं दे सकते अपन। घृतम पित्तानिल हरम, वो पित्त और वात। लेकिन आपने शलाका वाली बात कही, किताबों में और घरों में तो मुश्किल है, 10वें 11वें बच्चे को शलाका के द्वारा देने के पश्चात
आई एम एफ्रेड वो शलाका खो जाएगी, गायब हो जाएगी, या किसी भी अच्छे व्यक्ति के द्वारा अपने साथ चली जाएगी। नवजात के लिए बोल रहा हूँ, नवजात को शलाका नहीं सर, नहीं, पब्लिक प्लेस में अपने स्वर्ण आभूषणों को, अपनी पॉकेट को, अपने आधार कार्ड को, पैन कार्ड को बचाना मुश्किल होता है। शलाका तो निश्चित ही अभी तो यही थी, अच्छा उसके पास होगी, तीसरे चौथे लड़के के पास होगी, पता अब मिल नहीं रही है। नहीं, रजत शलाका बहुत सस्ती बड़ा लेके आएंगे इस कलयुग में। हाँ, अगर आप हर बच्चे से कहे उसके पिताजी माताजी लेके आए, एक 500 रुपए की एक शलाका बनवा लें कम से कम, बहुत हल्की सी, और वो लाए, अपना चम्मच ले आए, फिर तो उनके लिए कोई बात ही नहीं। और स्वर्ण नहीं तो रजत का ले आए। हाँ, रजत का सस्ता पड़ेगा और वो एंटीबैक्टीरियल होता है। रजत और रजत स्वर्ण तो देते ही एंटीबैक्टीरियल। हैं, झुंझुना देते हैं, बजाने के देते हैं, और हाँ। बच्चे उससे चूसते रहते हैं। मने नेल कटिंग की टाइम पर भी ये गम नहीं, टूथ कटर्स के तौर पर लेते हैं, तो वो ला सकते हैं अपने साथ, तो वेल स्टेरलाइज करके, और उससे अपने आइटम से चटवा दें, अपने संग ले जाए। और नवजात को पवन शर्मा जी को हम वापस कर रहे हैं, क्योंकि 10:30 भी क्रॉस हो गया है। वो कल के हमारे वेबिनार्स के टॉपिक्स के बारे में आप सबको इनवाइट कर रहे हैं, इन्फॉर्म भी कर रहे हैं। तो आप सबका धन्यवाद। डॉक्टर पेशेंट ट्रस्ट डे है सर, ये भी एक नया डे मिला, डॉक्टर पेशेंट ट्रस्ट डे, और मैं उसमें उनका कह रहा हूँ कि नीड ऑफ ट्रस्ट, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए, ये मेरा मानना है, जो कल बिल्कुल घटता जा रहा है। और नर्सिंग होम तोड़फोड़ हो जाती है, शीशे टूट जाते हैं जी। हाँ, हो गया। और दूसरी बात, यदि हम शेयर करें तो परसों बहुत बड़ा सेमिनार है जिसमें हम मल्ल के बारे में बात करना चाहते हैं। और मल्ल ऐसी चीज है कि जो आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में, तीनों में यूज होता है, तो और टॉक्सिसिटी भी उसकी होती है। तो हमारे साथ डॉक्टर के शंकर राव, एक्स हेड एंड एक्स डीन NIA रहेंगे, डॉक्टर गुलामुद्दीन सोफी बेंगलुरु से NIUM से, यूनानी से रहेंगे, सारंग जी हमारे भोपाल से आयुर्वेद से रहेंगे, लुबना कमाल जी लखनऊ से रहेंगी फॉर मल्ल या संख्या, और नितिन और मलिया जी उसकी टॉक्सिसिटी और उसके रेमेडीज पे रहेंगे। तो ये 2 वेबिनार है, कल और परसों हैं, जरूर जुड़िएगा, विदाउट फेल जुड़िएगा। परसों स्ट्रेच मार्क पे है, जितनी हमारी महिला बैठी हैं, मात्र शक्ति बैठी है, यदि वो मुझे गाइड कर सकें कि स्ट्रेच मार्क पे कौन अच्छा बोल सकता है और किसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उस दिन स्ट्रेच मार्क डे है। ये अंग्रेज भी जाने क्या क्या दिन मनाते हैं सर। मैंने 2400 ये साथ में 3 साल में इतने दिन सीखे कि नए नए दिन सीखने को मिलते हैं। रोज एक नया दिन, नया जीवन, नई शुरुआत, नई वेबिनार, नई चर्चा, नई संगोष्ठी। जय हो, आप सबकी जय हो। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। नमस्कार, प्रणाम, शुभरात्रि। नमस्कार। शुभरात्रि। नए दिन के साथ तो 365 दिन भी कम पड़ गए। सर इस महीने वैसे आपके आशीर्वाद से आज हमें 17 तारीख हुई है, 16 तारीख, और आपकी आशीर्वाद से 21 वेबिनार हो चुके। जय महाराज। गुड सर, कांग्रेचुलेशन सर। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सर। 4 कांग्रेचुलेशन और हो जाएंगी तो 40 का टारगेट हमारा महीने का पूरा होगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। Congratulations, डॉक्टर sir, and मनोहर thank जी you, को everyone. नमस्कार। Thank you. कांग्रेचुलेशन सर, कांग्रेचुलेशन। सभी को नमस्कार, प्रणाम, सभी को शुभ रात्रि।